This conference will now be recorded. ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह 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 शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या अली मदद सर या अली मदद तमाम साथियों को या अली मदद या अली मदद सर या अली मदद
يا لي مداسة Ya Ali Madad. يا لي مدات. Give me 1 second. We can't hear you. Now? Yes, sir. We can hear you better now. Okay, all right. Also, give me 1 second. Yeah. Kamran Sahib, today will be Farman number 32. All right. I'm trying to adjust the camera, but I'm not able to do it. It's all right. We can work like this. So we can see you, sir. Okay, all right. Thank you. तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद, مدات. नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, हाजिर इमाम. What a beautiful tasbih. ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह. खुदा की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो जाना. खुदा की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो जाना. शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या मौला. हमारी उम्मीदें, हमारी तवक्कल, हमारी नजरें, हमारा विचार हर हमेशा आपकी तरफ और आपसे जुड़ा हुआ है मौला. या मौला, या अली अल्लाह, हम पर रहम कर, हम पर राजी हो. या मौला, हम पर हर हमेशा अपनी रहमत और अपने नूर की, मोहब्बत की मीठी नजर रखना मौला, ताकि हम तेरे ही नूर की रोशनी में इस सिरातल मुस्तकीम पर चल सके, जिस पर तूने हमें रखा है, हमें पैदा किया है और हमें चला रहा है. कभी भी हमारी नजरें इससे ना अलग हो जाए. या अली अल्लाह, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला. तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला. या मौला मेहरबान, हम हर हमेशा तेरी मदद को तलब करते हैं, क्योंकि तू जानता है मौला, हमारी गुर्बत को तू जानता है मौला, हमारी कमियों को तू जानता है मौला. तेरी मदद के बगैर हम ये इल्मी काम हरगिज नहीं कर सकते हैं मौला. तो हमें हिदायत फरमा, हमारे साथ खड़े रहना मौला. अपना मुबारक हाथ हमारे शोल्डर पे रखना मौला.
तेरे ही मुबारक नाम से आगाज करते हैं। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम या मौला। Kamran Sahib is telling me that we're supposed to start from Farman number 34. So it's a 33. I think we did 32 last week. Okay, 33. Thank you. Kalam Imam Mubin, Farman number 33. Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi Allahumma Salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. मौला फरमाते हैं, तुम पूरी जमात सच्चाई से चलना, पराए माल और पराई औरत की तरफ बदनजरी ना करना, दसौं देकर हलाल का माल खाना। हम इस बात को आज का टॉपिक बनाएंगे कि दसौं देकर हलाल का माल खाना। दसौं के ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी क्लासेस की है। दसौं एक जमाने में जब हम गरीब होते थे, यानी कि हम एज ए होल खोजा जमात, खोजा उठावे बोझा, बहुत ही गरीब जमात होती थी। तो ये सवाल दूसरी तरीके से होता था और आप देखेंगे कि किस तरह से यही दसौं का सवाल 200 साल के बाद, 100 साल के बाद बदल गया। जब तकरीबन 120 साल कबल इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बहुत ही यंग उम्र में इमामत पर थे, आस्ते आस्ते मौला ने करम करके जमात को दौड़नी दी और जमात आस्ते आस्ते तरक्की करने लगी। I will repeat this in English for my English speaking friends. The question of the sun has changed in last 200 years. At the beginning, about 200 years ago, when our Jamaat, at that time, there was not much known of the other Jamaat, but Khoja Jamaat, Jamaat from Indo-Pak, some from Iran, who had come to India to live close to the Imam. That was the whole and soul of the Jamaat. But the Jamaat as a whole was very, very poor, living off of the land. Sometime during the droughts, they would not even have enough food to eat. So when Imam would come to any Jamaat, Imam would ask to the Amaldars, how is my Jamaat? And Amaldar would reply, Mullah, very poor. You know what question Mullah would ask? Do they give the son? And Amaldar said, Mullah, they have hardly anything to eat. How can they give the son? They have no money. And Mullah will guide them. You know how Mullah would guide them? Mullah would say, do they eat? And Amaldar say, yes, Mullah, hardly one bread, hardly two bread, hardly three bread. जब मौला पूछते हैं कि वो दसौं नहीं डालते हैं तो क्या खाना खाते हैं, तो अमलदार कहते थे
कि मौला मुश्किल से 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी उनको नसीब होती है, पैसे नहीं है, मौला बहुत करीब है। मौला ने फरमाया अगर वो 1 रोटी खाते हैं तो उनको कहो कि उसका चौथा हिस्सा जमात खाने में ले आए। If they are eating 1 bread, tell them to give me the quarter of that bread so I may bless them, ताकि मैं उनको दुआएं दूं, उनके लिए रहमत का बाइस बनूं और उनको उनके माल के अंदर बरकत दूं। If they do not give me that quarter of the bread, how would I return 100 and 1,000 times? So the problem and the question was, we have no money, and question was, how do we give the son? Now fast forward 120 years. अब आगे चलते हैं, आज के जमाने में आते हैं। आज दसों का क्वेश्चन है लेकिन दूसरा है। And what is the question today? I have so much money, I have so much assets, I have so many homes, I have so many stocks and bonds, I cannot even count. How do I give the son? आपने देखा कि वही इमाम, वही जमात, the same imam and the same jamaat. Now the blessing of the imam is on the jamaat, and jamaat is shukr alhamdulillah, shukr mullah, is very well off today. At a point where they cannot even count the money so they can give the son. So once again, we are at the junction where we will talk about the son once again. Not a new subject, not the first time. लेकिन ये सवाल अभी भी बहुत ज्यादा जमात के अंदर सामने आता है. And we will try to cover on 2 different sides. And then remember, हम दोबारा फरमान के ऊपर आएंगे क्योंकि ये फरमान का सेशन है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दसों का, कि दसों देकर अपने माल को हलाल करो. The income that we receive must be honest, because that was the first condition Mola put, कि तुम पूरी जमात सच्चाई से चलना. You must walk on this sirat al-mustaqim with the utmost honesty. यानी कि आपकी जो कमाई होगी वो सच्ची होगी. In this word the Mola used के दूसरों की तरफ बदनजरी ना करना. You know what that बदनजरी is? Keeping your eye on someone else, woman, money, or other thing than yours. Don't keep your eye on others. Keep your eye pure. What does it mean? कि अपनी जो सच्ची कमाई है, हलाल की कमाई है, उसकी तरफ नजर रखें, ना कि दूसरों के पैसों की तरफ, दूसरों के घरों की तरफ, दूसरों के मालों की तरफ नजर रखें. जो मौला ने आपको दिया है, जो आपका है, उसके ऊपर नजर रखें. Keep the eye on your and yours. So first, earn honestly. Now this question, please don't ask that I don't understand how to earn honestly. I know in the past when we were learning, we had all those questions.
What about if I do this? What about if I do this? If your heart is telling you that you are earning honestly, then that is the honest earning. If you are not stealing from anyone, if you are not gambling, if you are not doing anything which is you should not be doing, then that is your honest earning. Because a thief, a gambler cannot say that I stole the money from somebody else and now I'm going to give a dazon to make my earning pure. I mean, this is given. ये बात हमें अब समझ लेनी चाहिए और इसमें कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या कोई आदमी चोरी करके और फिर दसों डाल के कह सकता है कि मेरा माल हलाल का है? नहीं, वो नहीं कह सकता ऐसा। जुए में खेला हुआ पैसा, जुए से जीता हुआ पैसा, क्या वो हलाल का पैसा है? क्या मैं दसों डाल दूं तो वो हलाल हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि जो शर्त थी वो हलाल की कमाई की थी। अब हलाल की कमाई आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, आप अपनी अक्ल से कमाते हैं, आपका जो काम है वो मजदूरी है या ऑफिस में बैठकर कुर्सी पे बैठकर कमाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It doesn't matter if you are earning by working hard, a laborer, a shopkeeper, a real estate agent, a banker, sitting on your chair or working on a floor. It doesn't matter. As long your earning is pure, then मौला कहते हैं कि दसों देकर हलाल का माल खाना. Then when you give the dazon, your earning is pure because you earned honestly, because that was your condition number one. Earn honestly and then give dazon, so then it would be pure. I see we already having the same question we had last week. Earning from stocks and bond, investment, property. If you are not stealing money, then it is pure. So question is null and voided. Did you steal that money that you invested in a stock and bond? If your answer is no, I did not steal money to put it in stock or put it in investment, then the question is null and void. The answer is within yourself. How did I earn that money? Now, second part of this, the zone. Sometime in the business world, it is really hard to calculate how much earning do we have. And there is a simple way to calculate that. कभी कभार धंधे के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये कहना कि हमारी असल में कमाई कितनी है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर कोई ईमानदारी से हिसाब किताब रखता है तो वो आसान है. और before somebody asks me, let me go ahead and tell you. इससे पहले कि मुझे कोई पूछे, मैं ही आपको पहले से ही इसका जवाब मुहैया कर देता हूं. इसके बाद अगर आपको दसों के दूसरे लेक्चर सुन रहे हो तो आप जरूर सुन लेना. आपकी एक शॉप है, आपका एक धंधा है, एक बिजनेस है, doesn't matter what kind of business. If it is hard for you to calculate कि कितना इनकम है, तो इजी तरीका क्या है? आप अपने घर के अंदर जरूर
महीने के अंदर 1000, 2000, 3000, 10,000, 15,000 रुपये, डॉलर, पाउंड, यूरो, जिस भी कमाई करेंसी के अंदर आपकी कमाई है, आप घर पे ले जाते होगे, वो आपकी करंट, वर्ड को याद रखना, वो आपकी करंट आज की कमाई है, उस पर दसौन वाजिब है। कल जब एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द शॉप, एंड ऑफ द ईयर यानी कि जब आप टैक्स का काम करते हैं, आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, आपको एंड ऑफ द ईयर का आपका हिसाब किताब करते हैं कि दुकान में कितना माल जमा हो गया है, या आप दुकान को बेच डालते हैं। अगर आपको ईयरली एंड के अंदर पता चलता है कि मैं जो घर के अंदर 1,00,000 रुपये या डॉलर या पाउंड लेके गया था, मेरी इनकम दरअसल 1,10,000 थी। Maybe my income was 10,000 more than what I took home. Then your accounting is very simple. You already had paid your dasan on your taking home income. Now you have to pay for the balance of the income. Very simple, right? If you sell the shop, अगर आप अपनी दुकान बेच डालते हैं 5 साल 10 साल के बाद, आपने वो दुकान 1,00,000 में खरीदी थी, आपने 2,00,000 में बेच दी, आपकी इनकम कितनी हुई? 1,00,000 रुपया इनकम हो गई। आपकी दसम कितने पर होगी? 1,00,000 पर होगी। Just be honest to yourself. Imam is not asking you to show your books. Imam will not come and audit your book. Mukhi Sahib will not ask you that did you give me your dasan pure? Nobody is asking. Only person you are answerable to is yourself today and tomorrow too, Imam. Today, be honest to yourself. It's not that hard. Don't make it hard. इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल ना बनाएं। Same thing goes for property. घर खरीदना, stocks and bond खरीदना, investment करना, बहुत सारे अलग अलग धंधे हैं आज। We are no longer limited to the land as we were 200 years ago or 100 years ago. At that time, it was simple, but that time the issue was we had no money. Today, the business world is very vast and complicated. But our religion is not complicated. हमारा मजहब आसान है और हमारे मजहब को आसान बनाया गया है। उसमें जो शर्त है हमारे मजहब के अंदर, our religion is not hard. Do not make it complicated. Only condition is to be honest to yourself. Be honest to yourself. Imam is asking you to be honest. देखिए, very first word, be honest completely. Be honest completely. Be honest to yourself. And if you are honest to yourself, all the question about the son will go away. As long you are honest to yourself. A child, few years back, said a wonderful thing. We were talking about the son, and this child, remember, he was not more than 20-year-old. You know what he said about the son? That if you have to ask yourself, did I put my dasan correctly? Then you did not put your dasan correctly. Think about this statement. मैं उर्दू में और इंग्लिश में दोबारा रिपीट करता हूँ। एक बच्चे ने एक दसौन की क्लास के अंदर, सेशन के अंदर कहा कि अगर आपको पूछना पड़ता है अपने आप को
कि क्या मैंने अपनी दस्तों पूरी डाली है? इसका मतलब है कि आपने अपनी दस्तों पूरी नहीं डाली है. He said, if you have to ask yourself, did I give my daston completely and honestly? That tells you yourself that you did not do that. Because those who give the daston with a pure heart and give the daston a penny more than they think they owe. तो क्या है कि अगर आपकी daston, let's say again, example के तौर पर 100 रुपया, $100, 100 pound due है. Just put 101 and the question is null and void. आपकी ये फिक्र खत्म हो गई. आपने अपनी ईमानदारी से हिसाब करके $100 और ₹1 ऊपर, then you should not have any question. So here I will stop on the chapter of the thorn and we will go back to our Farman, because I wanted to take this time once again, because this is a question which keep coming to us every time we talked about the thorn in any Farman. But I hope and I pray that your heart are pure, you are honest to yourself, and you are doing what is required of you. मेरी दुआएं आपके लिए और उम्मीद है कि आपका दिल, आपका ईमान पक्का हो और आप अपने अंदर अपने आप से सच्चे हो और इस सच्चाई से अपने मजहब पर चलते हैं. ये नाचीज की दुआ है सबके लिए, जिसमें मैं खुद भी इंक्लूडेड हूं. आगे चलते हैं. तुम जमात खाने आकर बंदगी करो, दुआ पढ़ो. नमाज और दुआ में कोई खास फर्क नहीं. I would like to take another minute or two to talk about this part. When Imam in his Farman is talking about नमाज और दुआ में कोई फर्क नहीं, that tells us कि जरूर जमात के दिल के अंदर या जमात की जबान पर यह सवाल है कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं. ये जरूर जमात के दिल के अंदर या जबान पर सवाल है. Imam, if in his Farman, if he's telling us something, that tells us either the Jamaat was thinking or saying, what? How come we do not offer namaz as our brother and sisters in the Islam? And Imam says, there is not much different in namaz and dua. If you understand your dua, what do we have in our dua? We have two surahs, Surah Al-Hamd and Surah Ikhlas, at the beginning and the end of the dua, first part and sixth part. इसके बाद हमारे पास क्या है? दरमियान में 5 आयत, 2 आयत दूसरे पार्ट में, एक तीसरे, एक चौथे और एक पांचवे. We have a 5 ayat in the middle between second and the fifth part. The namaz requires 2 surah and one must be Surah Al-Hamd, Surah Fatiha. So our dua is a little bit more than requirement. The requirement was 2 surah only, but we have 2 surah and 5 ayat. So not only we are offering
the namaz, the shape and form has changed because we are no longer in the Shariat. We have crossed the tariqat, and at the level of haqiqat, the form has changed, but the requirement, minimum requirement of 2 surah and one being the Surah Al-Hamd has not changed. So Mola says, namaz और दुआ में कोई खास फर्क नहीं. Not much, right? Because the form has changed. The principle has not changed. The essence has not changed. Let's take the example of that. When we were born, our parents gave us a name. Let's say, I'll just take my own example, Aziz. When I grew up, after all this year, my name is what? Aziz. My soul is the same. I am the same person. What changed? The form, the body changed. But the essence, the original, did not change. That is the example of the Shariat. The Shariat, the form changed, the essence did not. The principle did not. Condition did not change. Only change was the form of it. So let's come to the Farman again. So this question, I hope we understand and we would not have that anymore. नमाज अरबी जबान में है और दुआ तुम्हें पीर सदरुद्दीन ने हिंदुस्तान की जबान में रचा कर दी है. Remember, this was way back in 1800 or 1900, about 120 years ago, when we had old Sindhi Gujarati dua. नमाज और दुआ सब एक है. नमाज पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन नमाज और दुआ के फायदे समझ कर पढ़ना चाहिए. ये फायदा कौन से हैं? So what are the benefit of namaz or dua, whatever you wanted to call it? The benefits are that when you are remembering Allah, you will not having bad thoughts. अगर आप दुआ के वक्त जमात खाने में बैठकर या दुआ के वक्त आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर उस दुआ या उस नमाज का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है. So what are the benefit? कि आप you will become pure. You will become clean. Because as you go closer to the remembrance, closer to the nur of the Imam, your soul, your heart, your mind will become pure. झूठ ना बोलना, पराय औरत, पराय माल में तमा ना रखना. Do not be greedy of others' things. मोहब्बत करके कमाई हुई हलाल की रोजी में से माले वाजबात अदा करके खाना. You see that? मेहनत करके, मेहनत से कमाई की हुई हलाल की रोजी. So condition was earn honestly. And I remember someone asking me a week or two ago that he sells something online and this and that. As long you are not cheating anyone, as long you are selling something honestly and you are not trying to cheat anyone, then that is your halal ki kamai.
your honest earning. अच्छा, यहाँ पर you all remember the 4 kind of Faramin, and one of that was by location. If you don't remember, let me repeat. There are 4 kind of Farman: limited into the time, limited into the space and location, worldly Farman, and Betul Kyal Farman. 4 kind of Farman. This next line looks like a Farman for the location when we lived in Africa or when we moved to Africa. So remember, this line is for the location. It may not apply to us today. So we will just read on it because it does not apply to us today. Mullah says, गोली को यानी कि काली औरत को घर में अपनी औरत करके ना रखना, एक से ज्यादा बीवियां नहीं करने, क्योंकि इस तरह करने से दिल शवत कहते हैं नफसानी ख्वाहिशात, the wish and the will of the carnal soul में ज्यादा गर जाता है और दीन व धर्म दिल से हट जाता है। इश्नाशरियों और तुम्हारे दरमियान बहुत फर्क है और बहुत फासला है, क्योंकि वो मूसा काजिम से मानते हैं और तुम छोटे इमाम यानी कि हजरत इमाम शाह इस्माइल से आज तक मानते चले आए हो। Now here is a historical Farman. Other one was location. Here, historical. So let's talk about that for a minute, just for our understanding. After Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Imam had 2 sons. Some followed the older son, Musa Kazim, and other followed the Janashin, the wali-e-ahd of the Imam Jafar Sadiq, Maulana Ismail. So some followed the older brother and other followed the true Hakiki Imam Nabi Aulade Ali, Imam Ismail. इसलिए हमारा नाम जो है वो इस्माइली पड़ा कि इस्माइल के मानने वाले, इमाम जाफर सादिक के बाद इस्माइल के मानने वाले. And those who followed Musa Kazim, they lost their imam after 12 imam. 5 were the same as us and they had 7 others and then they lost it. That's why they are called Ishna Shari, the follower of 12 imam. We are called Ismaili, follower of the Ismail, Muhammad bin Ismail, and on until today. That is the Farman of this, that we followed the Ismail and Aaj tak we are following the Imam, Nurun Allah Nur, Imam after Imam today. If someone asks you, what is the one miracle of your Imam?